Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hi, my name is Bhumika and I hope you all are doing absolutely great. So today I am back with a street style store haul. So for the people who don't know what exactly Triple S is, it is an online application, not application, it is an online website where you find footwear as well as clothes, both for men and women. So in case if you're interested in checking their website, I'll add the link to their website in the description box below. Now talking about their shipping time, बहुत time लगता है, बहुत in the sense 1 month पकड़ के ही चलना, तभी ऑर्डर करना. इफ यू आर पेशेंट तो ही ऑर्डर करना, बिकॉज उनके वेबसाइट पे भी उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि इट टेक्स 3 to 21 days फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू डिलीवर. द थर्ड थिंग विच आई वॉन्ट टू मैंशन इज उनके ऐप पे हमेशा ऑफर्स चलते रहते हैं, लाइक नॉट ऑन द ऐप, उनके वेबसाइट पे हमेशा ऑफर्स चलते रहते हैं, which is like 3 products for 999, 2 products for 999. It keeps on changing, so make sure you check that out and order your products accordingly. So for today's video I have some footwears and clothes to show you guys, so if you're someone interested then please keep on watching. Also, if you haven't subscribed to my channel then please go hit that subscribe button and join my YouTube family. And without any further ado, let's dive into the video. So starting off with the very first pair of heel, and the only pair of heel which I bought is this nude strappy block heel. इफ यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम यू मे हैव सीन, मैंने इसको बहुत पहन लिया है, लाइक उसकी कंडीशन से भी आप देख सकते हो. द डे इट अराइव्ड, फ्रॉम दैट डे आई एम ऑलमोस्ट वेयरिंग इट एवरी सिंगल डे वेर एवर आई एम गोइंग. सो इट हैज दिस क्यूट ब्लॉक हिल एंड इट्स रियली कंफर्टेबल, और उसका कलर भी न्यूड है, सो इट गोज विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस, आई बॉट इट फॉर 599, विच इज लाइक decent price for a heel like this. And it says it is for 999, but as I mentioned before, उनके ऐप पे हमेशा ऑफर्स चलते रहते हैं, so make sure you like keep checking on and then order. So this is the first purchase. As I was talking about heels, I wanted to mention a pair of heel which I bought from Triple S a few years back, and it's this white colored strappy heels. So इसकी कंडीशन, मतलब मैंने इसको भी बहुत बार पहन लिया है एंड इट्स स्टिल इन अ रियली गुड कंडीशन. आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस बिकॉज उनके कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड कुछ बिल्कुल भी नहीं है, विच आई विल शो यू फर्दर, सो कीप वॉचिंग. सो एज आई मेंशनड, दे हैव सम ऑफर, सो दे हैड अ ऑफर ऑफ 3 flats for 999. So I bought 3 different flats, and the very first pair of flat that I bought is this Indian one. Like it has a patch of lace going on, which is of really good quality, you can see. मतलब 3 फ्लैट्स मैंने लिए, उसमें से ये मेरा फेवरेट परचेस है, बिकॉज आई डोंट नो, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और वो दिखने में भी इतना अच्छा है. लाइक नो वन विल टेल कि इट्स just for 300 rupees, which is great. And for the size, I bought it in the size 39. Actually मेरा shoe size differ करता है, it may be 38 or 39, but for street style store I usually prefer, like for flats I prefer using 39. So check your size before you order in the size chart. Now on to the second pair of footwear or flats that I bought. It's this white colored strappy flat. It's so sleek, it looks really great. The quality of this product is also really good. Like इसके straps भी बहुत अच्छे quality के हैं, and for the price it's really amazing. And I got this one in size 38, which fits great on my foot. And मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा. Like अगर कंपैरिजन करने चाहे तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने दिखाया वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, विच वॉज दैट स्ट्रैपी हील. उसके बाद जो इंडियन वाला फ्लैट्स था वो मुझे अच्छा लगा, एंड दिस वन इज़ द like third favorite amongst all. And it's really good. Like if you don't have any tie-up wala heel, tie-up wala footwear, then please get this one because ये बहुत अच्छा दिखता है. And talking about the third pair of flat, it is also a tie-up one, and it's this black color. और इसका क्वालिटी बहुत बेकार है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये अच्छा है, बट द स्ट्रैप्स दैट दे हैव प्रोवाइडेड, आई विल शो यू व्हाट थिंग इज. इसमें से ना ये ऐसे थ्रेड्स निकल रहे हैं, और ये बहुत सारे निकल रहे हैं. मतलब जब से फुटवेयर आई है ना, यू विल सी बहुत सारे, ये देखो, मतलब हर जगह से थ्रेड्स निकल रहे हैं, विच इज आई थिंक
अगर उन्होंने 2 इतने अच्छे दिए तो थर्ड वन में कुछ तो हो गया झोल. बट आई वोंट सजेस्ट यू गेटिंग दिस वन. लाइक इसका फैब्रिक ना थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट वाला जो होता है ना वो टाइप्स है, तो मे बी उसकी वजह से वो थ्रेड्स निकल रहे हैं या क्या, आई डोंट नो. एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो हैज़ दिस काइंड ऑफ फ्लैट्स बट इट्स इन अ डिफरेंट पैटर्न. बट उसका ये वाला जो थ्रेड का मटेरियल है वो डिफरेंट है. सो आई थिंक बिफोर यू गेटिंग दिस वन, बिकॉज ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है. ये बहुत बेकार है. और इसका प्रॉब्लम क्या है, ये एक बार अगर आप पैर पे टाई करो ना तो वो जैसे ही आप चलते हो वो नीचे 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 हो जाता है, विच आई हेट. लाइक इतनी मेहनत करके आप उसको टाई करो और विद इन अ मिनट वो पूरा नीचे फिसल जाता है. सो दिस वन इज अ नो फ्रॉम माई साइड. That's all the pair of flats that I bought. Now about clothes, I actually bought 5 clothes for 999, which is I think a great deal. And the very first pair of clothes that I bought is this cropped shirt, which is also my favorite, like from the all things that I bought in clothes. It has this cute white and pink colored flamingos going all over, and इसका fit भी बहुत अच्छा है. Like it's kind of baggy, but it's not too baggy, and it comes like exact to the belly region, which is proper like a crop top kind of shirt. And the fabric is I think rayon. मतलब स्ट्रीट स्टाइल स्टोर पे अगर आप कोई भी प्रिंटेड कोई भी क्लॉथ लेते हो तो आई थिंक दे हैव द सेम फैब्रिक, विच इज द रेयॉन वन. Yes, I think it's the rayon fabric, and I bought it in the size small. It fits really good. Like you can see it on the try-on section. So the second pair of clothes that I bought is this cute crop top, which is trending all over the internet. I actually bought it because I don't own anything like this. But the only drawback for this one is it is like too cropped. Like मुझे नहीं पता इन लोगों ने इतना छोटा क्यों बनाया. Like you will have to wear something overneath, like to cover yourself. But it fits great. It looks great. The only thing that I hate about it is थोड़ा सा short है height में. I don't know what is the reason. Maybe मैं थोड़ी tall हूँ height में, इसलिए वो short लग रहा है या what. But I bought this one also in the size small, and this looks really great. Now on to the third pair of top. The third one I bought is this cute floral crop top, which has a tie-up thing in the front. And I got this one also in the size small. Like they have one size. So this one includes extra small, small and medium. So whoever is in between this size, they can get this one. And this one is also really cute. इसका fabric भी शायद rayon ही है. But the print that it has is so summer appropriate, and summers are almost here, so this one is a great purchase. So now on to the second last clothing item that I bought. It's this basic t-shirt, which is of a desired length, and it has like 3/4 sleeves. The color is olive green and white. It also has a small pocket in front, and इसका fabric शायद cotton है, which is great for summers. Like, and if you're someone who likes wearing casual t-shirts, tops on your daily basis, then this one would be a great purchase. So now on to the last purchase of this haul, and it's this pretty white colored cropped sweater. Actually I bought this because Georgia में अभी भी ठंड हो रही है, and I'm flying back Georgia super soon, so I thought it would be great for that weathers. And ये 200 rupees में मिल रहा था, so I was like I need to get this because इस पे इतना अच्छा offer चल रहा है. And the quality of this product is also really great. Also it has like woolen thing inside, you can see. So it's like winter appropriate, and I like this one also. Like this one is also one of my favorite purchase. That are all the things that I bought for myself from Street Style Store. So I hope you guys enjoyed watching this video, and if you did, then don't forget to hit that like button. Also subscribe to my channel for more such videos. And that's it. I'll see you guys in my next video. Till then, bye.